Yes. So yesterday we have discussed this cross-object field update actions using the workflows. How can we actually perform the, how to perform the cross-object field update action? That is what we have learned yesterday. Now, so out of the four actions, what you have, what you can perform with the workflows, like sending the email alert has been completed. And second was that was actually sending the outbound message. Apart from the outbound message and sending the assigning a task. So by today, I'm going to start with the assigning a task, and updating a field has also been. So out of that four action, we are going to complete three. Apart from the sending of the outbound messages, that cannot be completed right now because we have not learned about the integrations, right? But with this, actually, with this, we are going to end with the workflow. So once you understand this, this is going to be the last topic of the workflow. So after this, by the next lecture, I'm going to start with the process builder. The second kind of the business automation tool is the process builder. So yes, what is how to assign the task? That is the second story. First of all, we need to discuss with this what exactly is the task. What is a task? What is an event? So let's start with these two things. What exactly is the task and what is the events. So let's go to the our org, and if I go to the home page, if I go to the home page, so let's see a few things over here. See, this home page actually have different sections. This home page have different sections. The very first section, what you observe over here, this is the chatter area. You can even hide the feeds from here also. Rather, you can show the feeds or hide the feeds. So this is the very first area is the chatter section. After the chatter section, we have a section called as calendar section. Third is my task. So these two sections, calendar and the task. Actually, calendar is used to display the events. Whatever the event you have planned, whatever the event you created. So that events are going to be listed out over here. And then my task section is going to be display all the tasks, whatever you created over here. So inside Salesforce, basically we have these two objects. These are the two standard objects, let me tell you this. Task object and the event object. These two are the standard objects. The object code of, the object ID of task is 00T and the object ID of event is 00U. So basically these are the two objects, 00T and 00U, task and the events. What is this? These are the two standard objects of the Salesforce. Now, Salesforce provide these two objects as a part of activity features. There are so many features inside the Salesforce. There are so many features inside the Salesforce. One of the features is activity. So with the help of activities, we can perform, we can perform certain tasks and certain events we can plan. So these two, the task and the event is a part of activity features of the Salesforce. It's activity features. So we see, I show you one thing over here. I'll come back to this, I'll come back to this too. We first try to understand how to manually create a task and how to manually create an event with new event and new button. Okay. So we will do this. But first of all, let's understand few concepts that are related to this activity feature of the Salesforce. So let me show you something, so that you can understand this concept. First of all, let me bring you to the schema builder. Yeah, let me bring you to the schema builder and clear every object. Now let me have some object like, we have the object like task. Let me have the object like event. Let me have few objects up. Let me have some another objects. I mean, let me have this task object and the now, let me try to show you few things on the schema. If I click the account object, if I click the accounts object, let me show you something. You see the account object. The account object is related to events and the task. The account object is related to task. In what relationship? Lookup relationship. The account object is also related to event in what relationship? Lookup relationship. Okay. Let me go to any another object. Let me try to go the campaign object.
Now I can see that campaign is also, campaign is also related to task and events. Okay. Let me try with some another object like contact. So I can see that contact object is also related to what? Contact object is also related to events and the task. That's great. Now let me try with this few of the custom objects what we have created. So we have created these many objects. Let's try with the hiring manager. So I can see that hiring manager object is related to task and event. Yes. Let's try with the position object. I can even see that position object is also associated with the task and events. Let's try with the candidate. Candidate is also associated with the task and event. But if you remember, we created all these objects, hiring manager, position, and the candidate. We have created this. I ask you one question over here. You remember and tell me whether we created this relationship, whether we have created this relationship of hiring manager and the position. Tell me whether we have created this relationship. Did we created this relationship of the of the candidate with the task and events? Did we create this relationship, hiring No, manager? sir. You know, did we created this relationship? Did we created any sort of relationship over here? No, we have not created. I mean, we have not created this relationship. But I can see these objects are related to task and event. How come this is possible? We just created this object. We have created position object. We have created hiring manager custom, and all these objects we have created. We have created author object also. See, author is even related to task and event. We have created book object. The book is also related to this task and event. The book is also related to the task and event. We have created this probably this book author object also. So whatever the object we created over here, whatever the object we created over here, these objects are related to task object and the event object. You can see this. These objects are related to task object and the event. But then we doesn't have created this relationship. So how come this is possible that every object, whatever we created, is related to task and event? Is related to task and event. Let me try this with a candidate object, or rather customer object. Let me show you something. So first of all, we understood one thing over here. We understood one thing, that whatever the objects, whatever the objects are there, these objects are related to task object and event. Actually, all of the objects, all of the standard object and all of the custom objects, all of the standard and all of the custom object, these are related to task object and the event objects. So how come this relationship has been formed? Let's discuss that. So let me show you something. If you remember how we created the objects, if you remember, just a second. So if you remember how we created any of the custom object, how we created. So how you create the object? You go to the setup menu, then you go to the build menu. Now inside the build menu, you expand this create, and then you create any object. You create any object. This was the link where actually we created all this. So let me try to open with any of the custom object. Probably here customer. So let me open the customer object. So when we created this object, when we created this object, I told you to click all these optional features. I told you to click all these optional features. Now see what happens when you don't click this allow activities. If you don't click allow reports, on this you cannot create the report. That is what we are going to learn later. अब इसके आगे पढ़ने वाले. But then yes, what happens when you don't click allow activities? So I told you one thing. During the optional, I mean, when we creating this customer object, whenever any object we created. So I told every one of you to make this, make all checkboxes to be clicked. Allow reports, allow activities, track field history, allow in the chatter. So now see, we are discussing upon the Salesforce activities feature. That is what we are discussing. Now we came to know that Salesforce has a feature called as activity, and as a part of activity, Salesforce provides you two things: task and the event. These two are the standard object which belongs to this feature of the Salesforce. What feature? It belongs to the activities features. Okay. So what happens when you create any object without clicking this checkbox? When you don't click this,
when you don't want to have any activities on that object. This is the object, customer object. Let's try to understand it. I'm creating this object and I don't want any activities. So I intentionally has unchecked this checkbox, allow activities, and let me now save it. Let me now save it. So see what happens. So if I refresh this, now you can see that this customer object is now, it is not related with task and events. So during the creation of the object, during the, first of all, let's have a discussion with this. उसके बाद हम कुछ और बातें करते हैं. So during the creation of the object, when you click this checkbox, allow activities. When you click this checkbox, allow activities. So your object, whatever you are creating, is going to be get associated. Is going to be get associated, and it's going to be in the relationship with two of the Salesforce object, task object and the event object. That means on this object, customer, if I'm making this checkbox to be checked, allow activities, and if I'm saving this, now this actually means that we are creating a relationship with task object and the event object along with this object, customer object. Now this means that on which this object, customer, we can perform task and we can plan for the events. We can create a task, we can create the events on this object. Why? Because we have associated this object. We have associated this object with the activities feature. We have associated this object with the activity feature of the Salesforce. We have associated this object or the activity feature. So this is one thing. This is actually one thing. Let me show you some one more thing over here. Show you some. एक चीज तो ये थी जो आपको पता चलना चाहिए कि whenever you click this checkbox, whenever you click this checkbox, allow activities. So whatever the object you are creating, that object is going to be get associated with Salesforce event and the task objects. These are the two standard objects, and these are the activity features of the Salesforce. ठीक है? एक तो ये हो. Let me show you something more. एक बात तो ये होती है कि if you don't click that allow activities, अगर आप allow activities click नहीं करोगे, that means your object is not going to be get associated with event or task. That means you cannot perform any activity on this customer object. You can perform any, you don't perform, can't perform any activity on this object. Okay. One more thing I would like to tell you that. See, when we create any email template, let me show you that. We actually create any email template. So we go to this communication templates, and then inside communication template, we go with this option, classic email, right? So we created so many kinds of email templates. Go to this folder, align email template, because whatever the templates we created, we stored it to this particular folder. For example, if this is, if this is an email template, in case registration notification, how we actually test this manually, how we actually, if I want to test this, I'm going to test it. I'm going to click this button, send test and verify merge fields. Send test and verify the merge field. Now here you have the list of all objects. Here you have the list of all objects. And then you can see the name of customer over here. See, the name of the customer is over here. Inside this list, you can find the name of the customer. Why? Because customer is associated with task and events. Now let me show you something. Let's go to the customer object. Let's go to the customer object. Let me once again edit this object, and let me deselect this. Allow activities. I deselected this. I unchecked this checkbox. I'm saving this. First thing, what is the impression? The first impression is this object is going to be the association between task and event is going to be removed. Now there is no more relationship. There is no more relationship of customer object with the task and event. One thing. Okay. Now let me refresh this window. And I want to test this email. For example, this one is customer related email template. Let's assume this. So before you see, before in this list, we were having the name of the customer. Now see where is the name of customer. The name of customer has gone. This means on the customer object, now you cannot test the email. Why? Because you have unchecked this feature of the activities and you cannot perform any activity on the customer.
customer is not related to activity features, right? That is why we cannot test anything on it. The customer becomes excluded from any activities. Now you cannot perform any event, you cannot perform any task, you cannot have any task or events because this is not related. Even you cannot test the emails, whatever the email template you design. If you wanted to test for the customer object, you don't have that list over here. So these are the few things what happens when you don't, when you don't click this checkbox, allow activities. Now once again, let me go back and make allow activities over here, and let me save it. So now your object has going to be get associated with task and the events. See, it is now the association is created over here. No? Association is created. And now if let me refresh this window. Now if I try to have this, if I try to test the email templates, I'm having this customer object. These are the few basic details what we have observed. I hope you guys have written all this, because this is a part of your interview question, admin interview question, whatever. और इतना अंदर तक देखो कोई नहीं बताता. Let me tell you this. Nobody is bothered to tell you all this. ये अगर allow activities if you don't click तो क्या होता है? Nobody even bother for this. इतना अंदर तक कोई नहीं पता. So that is why whatever I told you, although it's going to be recorded, record to ho raha hai, but still, creating your own sort of notes are always helpful. So I hope you guys have written what you don't, if you not click this allow activities, or what happens when you click allow activities. First of all, activity is a kind of feature inside the Salesforce. If you want to perform some sort of activities on the object, then click it. If you click it, it is going to get associated with two standard objects, task and the events. Apart from this, we can perform certain activities like we can send and test the email fields. We can test the verify the merge fields. We can test the email templates, whatever we design on that particular object. There are few things what happens when you click and when you don't click this. Similarly, we are going to understand what happens when you click allow reports and you don't click this. What happens when you click and don't click this. When you click this and don't click this. So we probably are going to see this all, and we are going to discuss this in the security also. Inside the security, we are going to discuss these things. Okay. So हर एक option probably we are going to cover every option what जो हम पढ़ रहे हैं. So only few could be left probably. Otherwise मैं हर चीज पढ़ा रहा हूँ. But I'm not actually stating myself towards it. भले topic लंबा चले जाए कोई problem. Then I'm telling you everything. I'm telling you everything. इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दो. चलिए आगे. So what we came to know is that Salesforce have a feature called as activities. Whenever we create any object, there is a checkbox called as allow activities. If we click that allow activities on that particular object, the object is going to be associated in lookup relationship with the task and the events. Moreover, Salesforce allow you to perform certain activities like sending the email alerts, testing the merge fields over that. It is possible with this, otherwise not. Okay. Now, this was all related to the activity feature. This is the point number 1, what I want to told you right now. Now, point number 2. Let's come to the task object and the event object. Okay, this was all related to what? This was all related to the activity features of the Salesforce. अब हम आते हैं discussion पे आगे बढ़ते हैं. Let's now understand what exactly is it means by the task and the events. ठीक है, चलिए. So let's come to this home page once again. So I told you one thing. This is also they admin interviews they actually doesn't have so many things to ask. Let me tell you, even if I take the admin interviews, I hardly find it difficult to, apart from the 25 to 30 questions, I don't have anything to ask, because admin is actually a limited kind of module. एक second. Just a second. ठीक है. Yes. So कहाँ था मैं? भूल गया. So देखिए, तो I also asked. अरे याद आ जाता है मुझे, घबराओ मत. ठीक है, thank you. But anyways, so
They probably could ask you this, okay, whenever you create any task or whenever you create any event where you can see this. Yeah, they could ask you this as a question. Where can you see all of the tasks and the events what you have created? Yeah, where on the Salesforce, whenever we create any event, I mean, rather we create any event or we create any task, where you can find it. तो उसका आंसर है just come to the home page. Home page have few sections. The first section is actually chatter section. This is the chatter section. बट ये इतना ब्लैंक है इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है. बट अदरवाइज वट एवर द चैटर फीड्स यू क्रिएट, तो थोड़ा सा मैं लूंगा इसके बारे में आगे चल के, बट अभी फिलहाल हाइड कर रहा हूँ. इट्स अ कोलैबोरेशन क्लाउड फीचर. कोलैबोरेशन क्लाउड का फीचर है ये जो हमारे को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है. So on the home page there have few sections, like the first section is actually your chatter section. Inside the chatter, apart from the chatter, below to the chatter, there is a calendar section, there is a task section और कुछ और sections. इसको अपन customize भी कर सकते हैं ना. We can customize this. We can make some sections to be some more sections we can to be made over to displayed over here, and we can remove few sections from here also. But usually these are the sections that are present. Now, whatever the task you created that are going to be listed at inside the my task section. Whatever the events you created that are going to be listed in the calendar section. Task के लिए task section है, calendar और event का event section नहीं होता है. Event जिस section पे display होता है वो section का नाम event नहीं है, section का नाम है calendar section. तो थोड़ा सा इस चीज को बारीक बारीक चीजें हैं, थोड़ा सा इस चीज को माइंड करें, थोड़ा सा इस चीज को लिख के रखें. Your task, whatever you going to create, that is going to be listed out inside this my task section. But the event, whatever you are going to create, is going to be listed in the calendar section. This is one thing. The second thing, they ask you what is the difference between task and the events. Yes, what is the difference between task and events? Now, see, मैं पढ़ाने वाला हूँ ये अभी, बट डिफरेंस आई वांट यू, आई मीन आई एम गिविंग यू दिस एज एन असाइनमेंट. एक डिफरेंस तो मैं बता दूंगा अभी, एक दो डिफरेंस तो मैं बता दूं, यस, है ना. बट देन आई वांट ऑल ऑफ यू, आई एम गिविंग यू दिस एज एन असाइनमेंट, क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन माय, क्रिएट द डिफरेंसेस बिटवीन टास्क एंड इवेंट्स. फ्यू ऑफ द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, अभी मैं बताने वाला हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, तो मैं बता देता हूँ. बट देन कुछ और पॉइंट्स जो है वो आप निकालें, ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन टास्क एंड इवेंट, दिस इज द सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन. Now, if I want to create manually, अभी workflow से नहीं, हालांकि workflow से we have this option create a task, हम कर सकते हैं, we can create a task with the workflows also. लेकिन अभी पहले manually देख लो, how to manually we create this. Let me go with this new, hit the new button. So task is assigned to which user? Training batch user. Task is always assigned to the user. Task are always assigned to the user. Task are always assigned to the user. Please write it down. Please write it down. Why I'm repeating these many? Because I want you to write it down. Whatever the task we created, the tasks are always assigned to a user. We can change the user also. We can change the user, we can even change the user also. But presently we don't have any, we don't created any user who's have the Salesforce license. This is the only user which is having Salesforce license. अभी Salesforce license क्या है इसके बारे में discuss करेंगे. But then you can create, you can select the users also. You can select the users from here also. Presently we don't have, we have these users. ठीक है, हम इतने सारे users हैं, but they don't have Salesforce license. Let me tell you that. So apart from this user, I can even select security and the integration user also. But then see, tasks are always assigned to whom? Tasks are always assigned to the users. Presently, by default, it is selecting the default system administrator. ये वो user जो हम हैं. So it is like, but tasks are always assigned to what? Tasks are always assigned to whom? Sorry. Tasks are always assigned to users. Okay. Now give any subject. Give any subject. For example, I'm creating this sample testing task. Sample testing task. Okay. Sample testing task. What is the due date? Let me select any due date over here. Let me select any. As soon as I click on this, calendar is going to be created. Let me. This task is probably for 13th of this month. What is the priority? Priority is normal. Task not started. You can select any contact or related opportunity name over here. You can select it that. Otherwise, skip. Give any comments. This is a sample testing task. Okay. Reminder, we want this reminders from, rather let not select the state. Let me select today's date. अभी का ही date let me select this today's date.
ठीक है, आज ही का डेट अभी देखता हूँ मैं, रिमाइंडर्स नोटिफिकेशन आते हैं कि रिमाइंडर नोटिफिकेशन किस तरह से आता है सेल्सफोर्स में, ठीक है, वो भी मुझे आपको दिखाना है। सो मैं आज की डेट ले रहा हूँ यहाँ पे एंड लेट मी सेव इट। ठीक है, तो आई क्रिएटेड वन टास्क, बट ये यहाँ पे दिखना चाहिए, व्हाई इट इज नॉट डिस्प्लेइंग, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत है, ओवर ड्यू। सो लेट्स सिलेक्ट दिस मंथ ऑल ओपन, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दिस मंथ इफ आई सिलेक्ट, सी this I created a task, this I created a task, whether it is completed cross मतलब no it is not completed। तो whenever it is completed complete हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से रेड ग्रीन कलर से टिक मार्क हो जाता है। तो अभी यू कैन सी द कंप्लीट में लिखा है माइनस, तो इसका मतलब ये है कि अभी क्रिएट नहीं हुआ है। व्हाट इज द स्टेटस, दिस इज नॉट स्टार्टेड। ठीक है, तो whenever you create any task it is going to be listed out in my task section, and this is how we create a task manually। Go to this new button, just fill whatever the entries over here, and then we can create a task, we can create a task। Now let's create an event। Go to the calendar section, go to this, okay, give any subject, like sample testing event। You can give the name of the contact also, if you want you can give the select the contact also, otherwise you can skip this, you can select the contact also। Then okay, you can select the contact, moreover you can select the opportunity। हाँ, ये जो चीजें हैं ये थोड़ी अलग है। टास्क और इवेंट के बीच में अगर कोई डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस मैं यह बता रहा हूँ कि इवेंट में आपको लोकेशन भी मिलता है। इवेंट हैव स्टार्ट डेट, इवेंट आल्सो हैव एंड डेट। टास्क में सिर्फ एक ही डेट होती है, टास्क की डेट। टास्क डजंट हैव लोकेशन, टास्क ओनली हैव वन डेट। इवेंट हैव टू डेट्स, स्टार्ट डेट, एंड डेट। पॉइंट नंबर वन कुड बी लाइक दिस, टास्क डजंट हैव लोकेशंस, इवेंट हैव लोकेशंस। ठीक है, इवेंट हैव लोकेशन, तो सदर में ये इवेंट है प्रॉब्लम, कोई भी इवेंट, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट कलेक्शन। one of my client is probably giving me some documents, I need to collect it, that is what। तो रिमाइंडर कब चाहिए, यू वांट रिमाइंडर 15 मिनट्स पहले मुझे रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, द टास्क इज गोइंग टू बी स्टार्टेड लाइक दिस, और ये स्टार्ट मतलब 19 को स्टार्ट होकर 19 को खत्म हो रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में टास्क इवेंट प्लान किया हुआ है। व्हाट इज द इवेंट, आई एम हैविंग दिस client meeting, I am having this client meeting, it's a client meeting call rather। ठीक है, why it is for, it is for the document collection, बस इतना ही और कुछ नहीं। So now let me save this। If I now save this, see one event has been so how exactly we get this notifications। ठीक है, अब वो यहाँ पे मैनुअली आता है, चाहे डायलॉग बॉक्स के थ्रू। अब ये आएगा मतलब अभी अभी अगर ये आ गया अभी तो अभी दिख जाएगा, अदरवाइज कल जब अपन लॉग इन होंगे तो ओवरड्यूज में चला जाएगा ये, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट वन नोटिफिकेशन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है यहाँ पे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो उस तरह से नोटिफिकेशन आते हैं इवेंट्स के, ये अपन देखेंगे अभी, डोंट वरी, बट अभी उस पर मत जाओ, अभी जो सामने है वो देखो। पहले आप क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज यू हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ टास्क, हाउ टू क्रिएट एन इवेंट। Where does your task is going to listed out? On which section? On which section your events are going to listed out? Events are listed on the calendar section. Tasks are listed on the my task sections। ठीक है, अगर यहाँ नजर नहीं आ रहा, if you created this, तो यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना। टुडे इज व्हाट, आज का टास्क है, ओवर ड्यू है, टुडे प्लस ओवर ड्यू। ठीक है, टुमारो, कल का टास्क है क्या, इस तरह से। तो कल कोई टास्क है ही नहीं, देखो, यू वोंट गेट एनीथिंग। फिर नेक्स्ट 7 days ऑल ओपन टास्क, ऑल क्लोज टास्क। ठीक है, फिर आपको इस तरह से ना, यहाँ पर सेटिंग गलत रहेगी तो फिर नहीं हो, राइट, इस तरह से। तो दिस इज द मैनुअल वे, दिस इज द मैनुअल वे ऑफ क्रिएटिंग अ टास्क एंड द इवेंट। अब यही चीज अपन बिजनेस ऑटोमेशन से कर सकते हैं। दैट मीन वी कैन डू इट विद द प्रोसेस बिल्डर, वी कैन इवन डू इट विद द वर्कफ्लोस आल्सो। वर्कफ्लो में जैसा कि हमने पढ़ा कि देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस, वर्कफ्लो हमने पढ़ा कि देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस। व्हाट आर दीज एक्शंस? सेंडिंग द ईमेल अलर्ट, दैट इज वी ऑलरेडी हैव कवर्ड। Then field update action, we yesterday and day before yesterday we have discussed this। इसमें दोनों चीजें आपने पढ़ी, सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट और क्रॉस ऑब्जेक्ट कैसे होता है, फील्ड अपडेट, दोनों चीजें पढ़ाया मैंने। सेंडिंग आउटबाउंड अभी नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज दिस हैव अ रिस्ट्रिक्शन, यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द इंटीग्रेशंस, जो अभी नहीं है आपके पास, तो वी सिंपली नीड टू स्किप दिस। ठीक है, तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, एक्चुअली ये कभी नहीं पढ़ना है आपको, तो मैं सही सही बता रहा हूँ। बिकॉज जब हम रेस्ट एपीआईज पढ़ेंगे तो वी डोंट यूज सोप एपीआई एंड वी डोंट यूज एक्सएमएल एनीवेयर। These are something which is a legacy system. This is very old technology. Nowadays, whatever we used as an API is something called as REST API. ठीक है, REST API. We don't use XML and we don't use SOAP no more.
क्योंकि हम सोप में XML यूज होता था, और आज जो हम यूज करते हैं जिस फॉर्मेट को, दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड अ जेसन फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एंड वी यूज रेस्ट एपीआई रादर ऑफ द सोप एपीआई। तो अब जो है रेस्ट यूज होता है। रेस्ट क्या है एक्चुअली, बहुत लाइट वेटेड होता है, जेसन जो है ना काफी लाइट वेटेड है। तो सोप जो और XML जो है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए आजकल जितनी भी एपीआईज बनती है ना वो सोप यूज नहीं करती हैं। दे डोंट यूज XML। XML आज से ना 5 साल 10 साल पहले यूज होता था, बट जब से जेसन आया है तब से XML को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। तो XML से जो सर्वर कॉल्स लगते हैं उसको टाइम भी ज्यादा लगता है, और जेसन के सर्वर कॉल्स जो होते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसकी कुछ वजह है, तो जब मैं आपको एपीआईज पे लेके जाऊंगा तब ये चीजें क्लियर करूंगा कि XML के सिवाय जेसन क्यों लेना, और सोप के बजाय रेस्ट क्यों लेना, रेस्ट एपीआई क्यों कॉल करना। तो इसके डिफरेंसेस लिख पाता हूँ मैं आगे चल। ठीक है। तो प्रोबेबली ये कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आज जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, तो वी नेवर यूज XML एंड सोप, rather of the XML and SOAP we use a combination of JSON and REST API। ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, हालांकि इंटीग्रेशन आपको पढ़ेंगे, बट इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद में भी ये नहीं पढ़ेंगे हम, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो इसके बजाय हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, और वो रहेगा आपका रेस्टफुल एपीआई एंड यूजिंग ऑफ जेसन फॉर्मेट। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस असाइनिंग अ न्यू टास्क। तो असाइनिंग, whenever we assign a task, the task is always assigned to whom? The task is always assigned to the user. The task is always assigned to the user. Remember this. The task is always assigned to the user. तो अब इसके ऊपर एक यूज केस सॉल्व करते हैं, जो तीसरी और आखिरी आज का डिस्कशन है। Let's configure a workflow rule. Let's configure a workflow rule to assign a task. किसको असाइन करेंगे? टू द करंट यूजर, जो भी यूजर अभी है, मतलब द करंटली लॉग इन यूजर, जो हमारा ट्रेनिंग बैच यूजर है। रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर एक्शन, रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर कोई भी एक एक्शन के लिए आप यूजर। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है मुझे हु आईडी और व्हाट आईडी पढ़ाना, तो मैं पहले ये कवर कर लेता हूँ आपका। ये कवर करने के बाद में फिर मैं आपको हु आईडी और व्हाट आईडी पे आता हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु आईडी क्या है, व्हाट आईडी क्या है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे आपको, पहले मुझे ये वर्कफ्लो कवर करने दो, उसके बाद फिर मैं आता हूँ वापस यहाँ पर आऊंगा, फिर ये डिस्कशन में लूंगा। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट द वर्कफ्लो। लेट्स गो टू द additional, let's go to the setup menu. How to create the workflow, we know this है ना। Go to the setup menu, go to the build menu, और build menu में जाने के बाद just expand the create menu। create menu जैसे आप expand करते हैं, at the bottom of this list you have this workflows and the upload, उसको भी एक बार expand कर लीजिए। and after expansion you have this option work। ठीक है। चलो, ये अगर आप ये बार बार नहीं देखना चाहते तो you can make this don't show and then continue, जैसे भी आपकी can customize। These all are the workflows what we have created on these object, lead, position, है ना, सब पे किया हुआ है। ठीक है। But then we have not created anything on the task. Task is also one object. Task is also one object. So let's create a new rule. Let's select the object. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ। जैसे कि 104 को मैंने कौन सा टास्क क्रिएट करवाया था। 04। zero, 5। Let's solve this use case। ठीक है। Configure a workflow rule on which object? We need to configure it on the position object। ठीक है। We are creating a workflow on the position object to assign a new task। एक टास्क असाइन करने के लिए किसे? To the current user regarding a particular action। What is that action? That action is as soon as one position is created, notify the hiring manager with the pop-up alerts। हायरिंग मैनेजर को पॉपअप अलर्ट्स आ जाने चाहिए कि वन न्यू पोजीशन हैज बीन क्रिएटेड। देखिए हमने इसके लिए क्या हुआ है कि वी इवन हैव क्रिएटेड द ईमेल अलर्ट्स आल्सो।
कि जैसे ही कोई नई पोजीशन क्रिएट होगी, कल का ही था अपना ये टास्क, कल या परसों में जब भी हमने किया है, दिस वाज द थिंग कि whenever वन ईमेल, whenever वन पोजीशन ऑब्जेक्ट में जाकर एक एक वी ऑलरेडी हैव डन दिस, कि पोजीशन ऑब्जेक्ट में जब भी एक नया पोजीशन क्रिएट होगा एंड इट इज बीइंग असाइंड टू द हायरिंग मैनेजर, तो वो हायरिंग मैनेजर को ईमेल जाने चाहिए। एक तो ईमेल इमीडिएटली चला जाएगा एंड देन फ्यू ईमेल्स, कुछ टाइम डिपेंडेंट एक्शंस थे, दैट ऑल डिपेंड्स कि यार वो उसका माइलस्टोन डेट क्या है, तो माइलस्टोन डेट से 10 डेज बिफोर, 5 डेज बिफोर, ये सारे ईमेल अलर्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे ईमेल अलर्ट्स उसको ईमेल जा रहे हैं। बट प्रोबेबली दैट हायरिंग मैनेजर इज सो बिजी, वो हायरिंग मैनेजर बहुत बिजी है एंड ही डोंट हैव द टाइम टू चेक हिज ईमेल, उसने देखा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक और चीज यहाँ पे वी आर डूइंग, कि ठीक है ईमेल तो उसको जाने दीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ईमेल जाने दो, बट अपार्ट फ्रॉम द ईमेल वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग दी पॉपअप अलर्ट्स, पॉपअप अलर्ट्स हम उसको देने वाले हैं। कैसे? चलिए, तो यहाँ पर मैं अब टास्क असाइनमेंट सिखा रहा हूँ, बिकॉज टास्क जब क्रिएट होता है तो टास्क के साथ में पॉपअप अलर्ट्स मैसेज भी आना शुरू हो जाते हैं। अब वो देखो, अभी टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा, बिकॉज ये सारा यूएस टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है, इंडिया का टाइमिंग अलग है, यूएस का टाइमिंग अलग है। तो आज अगर दिख गया तो अच्छी बात है, वेन एवर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लॉग इन करूंगा ऑर्ग में, तब अब पॉपअप अलर्ट आ जाएगा, तो ये आपको तब दिख जाएगा कि ये हमारा आज का यूज केस है। तब इसको हम कैसे टास्क असाइन करना, न्यू टास्क किसको, यूजर को कैसे असाइन करना, वो इंपॉर्टेंट अपन सीखने वाले हैं। सो ऑन विच ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट इट, ऑन द पोजिशन ऑब्जेक्ट। कि पोजिशन ऑब्जेक्ट में जब भी पोजिशन ऑब्जेक्ट में एक नया पोजिशन क्रिएट होगा, सो assign a new task to the current user, ठीक है, assign a new task to the current user। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, कैन गिव दिस एज अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सॉरी, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छा डिटेल से देती, यहाँ पे सिर्फ मैं छोटा सा नाम दे कि असाइन अ न्यू टास्क टू द करंट यूजर। when we want I mean whenever it is created, ठीक है, created only पर, जब क्रिएट हो रहा है तभी, एवरी टाइम इट इज अपडेटेड पे नहीं, बट क्रिएटेड पे मैं चाहता हूँ कि whenever a new position has been created और वो असाइन की जाए किसी हायरिंग मैनेजर को, तो उसको पॉपअप अलर्ट जाने चाहिए, सो दैट अगर वो बिजी है, वो ईमेल नहीं देख रहा, सो एटलीस्ट उसका ध्यान जब भी स्क्रीन पे आएगा उसको पॉपअप मैसेज आ जाएगा एंड ही विल एक्नॉलेज कि अच्छा एक नया कुछ तो भी हुआ है और वो मुझे बेसिकली मुझे उस पर काम करना है। सो वी वांट सर्टेन क्राइटेरियाज टू बी मीट, है ना, तो कौन सा एक क्राइटेरिया तो एटलीस्ट देना ही पड़ता है आपको। तो वी कैन सिलेक्ट एनीथिंग, लाइक जैसे कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पोजीशन का जो स्टेटस है, पोजीशन का स्टेटस दैट शुड नॉट इक्वल्स टू क्लोज, क्लोज नहीं होना चाहिए, अगर क्लोज्ड है तो फिर उसको, या फिर रिक्रूटेड है तब भी नहीं, तो एक दो तीन चीजें हम यहाँ पे दे सकते हैं कि पोजीशन स्टेटस भाई एक तो क्लोज नहीं होना चाहिए, या फिर पोजीशन स्टेटस शुड आल्सो नॉट इक्वल्स टू रिक्रूटेड। अगर दोनों केसेस में अगर वो रिक्रूटेड भी है तो फिर आप जो है उसको पॉपअप अलर्ट मत दीजिए, मतलब उसको काम थोड़ी ना करना है। अगर इफ द पोजीशन हैज ऑलरेडी बीन रिक्रूटेड, कैंडिडेट हैज ऑलरेडी बीन रिक्रूटेड एंड द पोजीशन स्टेटस इज क्लोज, व्हाई शुड वी प्रॉम्प्ट एनी मैसेजेस टू द एचआर मैनेजर, है ना, इवन वी शुड नॉट सेंड हिम ईमेल। तो ईमेल के वक्त भी हमने ये चीजें देखा था, तो वहाँ ईमेल भेजना था, इसलिए ईमेल फील्ड भी मैंने चेक किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक दो चीजों के साथ, रूल क्राइटेरिया के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा एक्चुअली डिस्कशन तो हो चुका है इस चीज के ऊपर, है ना, आप जान चुके हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेट मी सेव एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इमीडिएट एक्शन है अपना, टाइम डिपेंडेंट एक्शन तो नहीं है। इमीडिएट एक्शन में जिस एक्शन को अब मैंने करना है वो है न्यू टास्क। ईमेल अलर्ट्स हो चुका है, अपडेट फील्ड में दोनों पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, क्रॉस ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट दोनों। आउटबाउंड अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ सकते, अब बहुत ही आउटडेटेड है ये, बट देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू टास्क। ठीक है, अब जब आप टास्क क्रिएट करते हो, देखिए टास्क किस तरह से क्रिएट करना है। यू हैव इवेंचुअली, यू इवेंचुअली हैव, आप इस टास्क के यूजर इंटरफेस पे आ चुके हैं, और ये इंटरफेस अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा भी था इसके पहले। तो टास्क हमेशा किसको असाइन करना है, तो पहले वहां पे सिलेक्टेड था, अब हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। टू whom we want to assign the task, tasks are always assigned to the users, tasks are always assigned to the user। अब यूजर, रोल, ओनर, ये सब चीजें आप पढ़ने वाले, टास्क इज ऑलवेज असाइन टू द यूजर। प्रेजेंटली वी हैव ओनली वन यूजर, हालांकि तीन यूजर्स हैं, बाकी के दो के नाम क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो लाइसेंस नहीं। अब ये लाइसेंस क्या है ये अपन आगे चल के पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो अभी दिस इज द डिफॉल्ट ट्रेनिंग यूजर, ये है यूजर सिस्टम एडमिन। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है लाइक प्लीज कंप्लीट द, या फिर रादर गिव मी ऑनबोर्डिंग फॉर्मेलिटीज, ऐसा मैं लिखने वाला था। और वन पोजीशन इज क्रिएटेड, एक पोजीशन क्रिएट हुई है, एंड अलॉटेड टू यू, एक पोजीशन क्रिएट हुई है और जो कि आपको अलॉट की गई है। वन पोजीशन इज क्रिएटेड एंड बीइंग अलॉटेड। ठीक है, यूनिक नेम ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, ड्यू डेट, व्हाट वी वांट दिस के ये टास्क उसको कब होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सारे वही वही डिस्प्ले होती है जिसकी डेट्स हो। इसके पहले भी आपने ये देख चुके हो। तो आई वांट दिस एज टू बी रूल ट्रिगर्ड डेट, पोजीशन क्रिएटेड डेट, पोजीशन क्रिएटेड डेट प्लस 0। मीन्स यहाँ पे दो चीजें लगा सकता हूँ, मैं दोनों चीजें समझा के दे रहा हूँ। ये जो मैं टास्क प्लान कर रहा हूँ, इसके पॉपअप अलर्ट मैसेजेस कब आना चाहिए। ठीक है, इसके पॉप अलर्ट मैसेज कब आना चाहिए। रूल ट्रिगर डेट मतलब होता है जिस दिन आपने क्राइटेरिया बनाया उससे प्लस एक दिन, 2 दिन, प्लस माइनस जो भी। ठीक है, पोजीशन माइलस्टोन, इसके पहले जब आपने काम किया था एंड टाइम डिपेंडेंट एक्शन जब हमने क्रिएट किए थे, तब हमारा पूरा लॉजिक निर्भर करता था टाइम डिपेंड माइलस्टोन डेट के ऊपर। तो वहां पे जिस एंटिटी को मैंने सिलेक्ट किया था वो था माइलस्टोन डेट। तो यहाँ बेसिकली आपको ये जितने भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये वो ऑप्शंस हैं जिनका फील्ड है डेट, टाइम डेट, रूट ट्रिगर डेट, पोजीशन ऑब्जेक्ट में से क्रिएटेड डेट, पोजीशन ऑब्जेक्ट की माइलस्टोन डेट, पोजीशन ऑब्जेक्ट की ओपन डेट, हायरिंग मैनेजर की क्रिएटेड डेट, कि हायरिंग मैनेजर से रिलेशन है इसका एक लुकअप में, करंट यूजर की क्रिएटेड डेट, करंट यूजर लास्ट लॉगिन कब हुआ था वो डेट, या यूजर के पासवर्ड कब चेंज हुआ था वो सब डेट। तो ये जितनी भी फील्ड्स नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली डेट और डेट एंड टाइम वाली फील्ड्स है। इसमें से हमको हमारे हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने सिलेक्ट किया अभी कि जब पोजीशन क्रिएट हुई है, जैसे कि आज की डेट में अगर पोजीशन क्रिएट हुई आज की डेट में, तो उसको अलर्ट्स मैसेज कब जाने चाहिए, आज प्लस 0, मतलब आज ही से। अगर मैं इसको +1 कर दूंगा तो आज पोजीशन क्रिएट हुई है तो अलर्ट आज ही जाएगा, वो जाएगा। लाइक 19 को क्रिएट हुई तो वो 19 + 1 = 20। अगर मैं 2 कर दूंगा तो 19 + 2, 19 + 10, ऐसा ये है इसका लॉजिक। तो मैं चाहता हूँ कि आज ही से जाए, तो रूल, एक तो रूल ट्रिगर डेट भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए आ गया, दिस इज समथिंग कॉल्ड, अब ये सैंपल टेस्टिंग वाला है, ये अभी वाला नहीं है। देखिए ये सैंपल टेस्टिंग वाला है, जो अभी मैंने वहां पे मैनुअली क्रिएट किया था ना, ये वो चीज है। तो इस तरह से पॉपअप अलर्ट्स मैसेज आते हैं। अब आप खुद सोचिए, मैं ईमेल देखूंगा या नहीं देखूंगा वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही पॉपअप अलर्ट आता है इमिडिएटली हमारा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है ना। एज सुन एज वी गॉट दिस पॉपअप अलर्ट मैसेज, वैसे ही हमारा ध्यान उस पर आता है। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, रिमाइंडर टाइम, लोकेशन क्या है, ठीक है, क्या है सब्जेक्ट वगैरह सब। अगर आपको और देखना है सब्जेक्ट अच्छे से क्या है तो मेरा क्लिक ओवर हियर, तो यहाँ पे ये वापस आ जाता है। ठीक है, इस तरह से चीजें होती। तो बेसिकली ये होता है पॉपअप अलर्ट, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ पॉपअप अलर्ट। ये पॉपअप अलर्ट इस तरह से आते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ हम भी अभी क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो पोजीशन क्रिएटेड डेट या रूल ट्रिगर डेट, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी डेट आप लेंगे, बिकॉज रूल भी तभी ट्रिगर होगा जब पोजीशन क्रिएट हो रही है, ऐसा है। तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप, रूल ट्रिगर डेट या फिर पोजीशन ट्रिगर डेट प्लस 0, मतलब आज के। इफ यू वांट टू हैव एनी कमेंट्स यू कैन कमेंट, यू कैन गिव एनी कमेंट्स ओवर हियर डिस्क्रिप्शन, जैसा कि वन, यही कॉपी कर लो। वन पोजीशन हैज बीन क्रिएटेड एंड अलॉटेड टू यू, allotted to the हायरिंग मैनेजर, जो भी हायरिंग मैनेजर उसको अलॉट हो गई। इस तरह से व्हाट इज द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी सेटअप इज नॉट स्टार्टेड, प्रायोरिटी आई एम कीपिंग दिस एट हाई। अब मैं इसको हाई रख रहा हूँ, नॉर्मल से हाई। तो हाई रखने के बाद में एक आइकन आता है, उस पर कौन सा आइकन आता है वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, इसे इसलिए मैं इसकी प्रायोरिटी हाई कर रहा हूँ, पिछले वाले टास्क की प्रायोरिटी मैंने नॉर्मल कर दी थी। सो प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी 3 तरह की होती है, नॉर्मल, लो और हाई। तो मैं हाई रख रहा हूँ इसको, एंड लेट मी सेव इट। ठीक है, तो आई क्रिएटेड वन टास्क, एक टास्क मैंने क्रिएट किया है। लेकिन देखिए टास्क कब क्रिएट होगा, जब वर्क फ्लो फायर होगा।
ये जो आपने टास्क क्रिएट किया है, ये टास्क आपने क्रिएट करने का ये जो ऑप्शन दिया, ये वर्क फ्लो के अंदर दिया है। तो जब वर्क फ्लो फायर होगा तो टास्क क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर मैं अभी जाके अगर होम पेज पे देखूं तो मुझे नहीं दिखने वाला। वाई? बिकॉज टास्क अभी क्रिएट हुआ ही नहीं है। टास्क यहाँ पे क्रिएट हुआ ही नहीं, ऑल ओपन टास्क नहीं है यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्क फ्लो ही फायर नहीं हुआ है। वर्क फ्लो पहले फायर करेंगे आप। पहले तो डन कर लेके इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। वर्क फ्लो एक्टिवेट हो गया, लेकिन एक्टिवेट होने के बाद में भी ये नहीं आएगा। इफ आई नाउ रिफ्रेश दिस अगेन, अभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि पोजीशन स्टेटस, जब पोजीशन ऑब्जेक्ट में पोजीशन क्रिएट होगी, क्रिएटेड, हमने यहाँ पे जो वर्क फ्लो बनाया है, दिस इज ऑन द पोजीशन ऑब्जेक्ट रादर क्रिएटेड, इसका क्राइटेरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू गो टू द पोजीशन ऑब्जेक्ट एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू। एक नई पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो पोजीशन नेम इज Salesforce अपेक्स डेवलपर। ठीक है, इवन ही एचआर ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल भी आ जाएगा क्योंकि एक और वर्कफ्लो काम कर रहा है। तो इट्स अ न्यू पोजीशन। हु इज द हायरिंग मैनेजर? तो अब यहाँ पे हमको वो हायरिंग मैनेजर सिलेक्ट करने हैं जो कि खाली है, क्योंकि मैंने 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट कर रखी। सो लेट मी फर्स्ट सी कि कौन सा हायरिंग मैनेजर खाली। आदित्य शर्मा, अभिनव शर्मा, आदित्य शर्मा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 10, कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, लोकेशन इज फॉर बैंगलोर। ठीक है, स्किल्स रिक्वायर्ड अपेक्स, लाइटनिंग, एलडब्ल्यूसी। पोजीशन डिस्क्रिप्शन अपेक्स डेवलपर। मिनिमम बजट दिस, मैक्सिमम बजट दिस, ओपन डेट आज की, माइलस्टोन डेट लेट मी सिलेक्ट दिस 31st। ओके, एंड आई सेव दिस। तो अब मैंने एक रिकॉर्ड सेव कर लिया। ठीक है, तो जब मैंने पोजीशन रिकॉर्ड में जाके एक रिकॉर्ड सेव किया, सो इन द बैकएंड ऑफ द पोजीशन इस पे जितने भी वर्क फ्लोज होंगे वो सारे फायर हो चुके हैं। तो एक तो हमारा प्रीवियस वर्क फ्लो, पुराना वर्क फ्लो जो हमने बनाया था, ठीक है, एक पहले हमने एक वर्क फ्लो बना रखा है, वो भी फायर हुआ होगा। मतलब उसने एसएफडीसी पर मुझे एक ईमेल देना चाहिए। एक तो वो वाला फायर हुआ जो हमने इसके पहले बनाया था। ठीक है, इतना लंबा चक्कर कैसे हो जाता है? एक तो वो वर्क फ्लो फायर हुआ है, और उस वर्कफ्लो के हिसाब से एक इमीडिएट अलर्ट आ गया है मुझे, ये देखिए। ठीक है, एक तो ये कि वन सेल्सफोर्स अपेक्स डेवलपर पोजीशन, एक तो ये फायर जो हमने इसके पहले क्रिएट किया था, राइट, अदिति शर्मा। और अब एक दूसरा एक और वर्कफ्लो फायर हुआ है जो कि जिसने, नाउ इफ आई गो टू योर होम, अब होम पे जाने के बाद में इफ आई, हाँ अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो आई कैन सी दैट वन न्यू टास्क हैज बीन एडेड ओवर हियर। एक नया टास्क एडेड हो चुका है। टास्क का सब्जेक्ट है वन पोजीशन इज क्रिएटेड एंड अलॉटेड टू यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सिंबल नजर आ रही है, दिस इज फॉर दी हाई प्रायोरिटी टास्क, ये रेड सिंबल। ये यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसके प्रायोरिटी नॉर्मल है या फिर इसकी प्रायोरिटी लो जो भी है, बट इसकी प्रायोरिटी हाई है। इसकी प्रायोरिटी हाई है। अब जब ये टास्क क्रिएट हो गया ना, ये टास्क क्रिएट हो चुका है, तो इस टास्क के लिए फिर पॉपअप अलर्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। इस टास्क के लिए भी पॉपअप अलर्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब वो थोड़ा सा डिपेंड करता है टाइमिंग्स वगैरह के ऊपर। यहाँ पे यूएस का टाइमिंग और अपना टाइमिंग के हिसाब से जैसा भी आए, एंड इट इज अलॉटेड टू whom? इट इज अलॉटेड टू Salesforce अपेक्स, ऐसा कुछ तो भी इसका रिलेटेड। दिस इज हाउ वी क्रिएट द टास्क। और ये हमने मैनुअली क्रिएट नहीं किया, दिस इज वी क्रिएटेड विद द ऑटोमेशन। व्हाई ऑटोमेशन से? कैसे कि वी एक्चुअली हैव अप्लाइड वन पोजीशन ऑब्जेक्ट है, मैंने एक वर्कफ्लो क्रिएट किया, वर्कफ्लो के अंदर मैंने टास्क क्रिएट किया, वर्कफ्लो के अंदर आई क्रिएटेड अ टास्क। और जब ये पोजीशन ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो वर्कफ्लो फायर हुआ। एक तो मुझे ईमेल आ गया, जो कि इसके पहले जब हमने एक बार ये इससे पहले भी किया था। तो एक तो ये वर्कफ्लो, दो अलग अलग वर्कफ्लो काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो अलग अलग वर्कफ्लोज काम कर रहे हैं। एक वर्कफ्लो ने मुझे ये ईमेल भेज दिया, दूसरे वर्कफ्लो ने यहाँ पर एक टास्क क्रिएट कर, और ये है वो टास्क। ठीक है, ये है पर्टिकुलर वो टास्क। सो दिस इज हाउ एक्चुअली दिस टास्क इज गोइंग टू बी वर्क। टास्क ऐसे काम करता है बेसिकली। यस, एनी क्वेश्चंस? ठीक, ये आज मैं अपलोड कर दूंगा इसी के हिसाब से। बाय टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस बिल्डर। कल इसके आगे देखेंगे आप प्रोसेस बिल्डर। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।